Hello friends, today we are going to learn interesting topic that is chemical bonding. There are basically three types of bond for class 10: ionic bond, covalent bond and coordinate bond. So we are starting with the ionic bond. What is ionic bond? The bond which exists between ions. What is ions? Ions are positive ions. There are two types of ions basically, positive ions and negative ions. Positive ions are also called as cation and negative ions are also called as anion. और जब ये cation और anion के बीच में जो bond होता है उसको हम ionic bond कहते हैं. We can also say that this bond exists between metal and non-metal. तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है या जो मेटल और नॉन मेटल से जो चीज बनती है कंपाउंड, उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. वो आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनती है. और किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा है कि बॉन्ड एग्जिस्ट, दिस बॉन्ड आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन electropositive element and electronegative element. Now, electropositive element means metal and electronegative element means non-metal. तो आप तीनों में से कोई भी वे से बोलो, it means the same, that this bond exists between the ions, this bond exists between metals and non-metals, or this bond is existing between electropositive element and electronegative element. तो ये बात हो गई हमारी डेफिनेशन. अब एक्चुअल में समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता कैसे. Let's take the example of sodium. Now sodium basically it is a metal, correct? And chlorine it is a non-metal. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, whereas क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. Sodium, want to get stable according to octet rule. There comes the octet rule. What is octet rule? According to octet rule, element can donate, can accept and can share electrons to get stable to achieve a nearest noble gas configuration. मतलब element donate, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन. यानी अगर एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या किसी एलिमेंट ने वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रोसेस करते समय उनके लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है. तो सोडियम को स्टेबल होना है तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा. सो सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन and chlorine accept that electron, right? So chlorine that accept that electron and electronic configuration become 288. Now sodium ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसीलिए चार्ज आएगा प्लस, पॉजिटिव चार्ज, whereas chlorine accepted 1 electron so the charge will be minus. Okay, and due to this plus and minus charge, due to this plus and minus charge, opposite charge, there is the force exists between them. And that force is electrostatic force. Electrostatic force.
And due to this electrostatic force, sodium ion, that is Na plus, and Cl minus ion come together to form NaCl, okay, which is our common salt. So here, what we did, it is the explanation of ionic bond with respect to sodium and chlorine. The atomic number of sodium is 11. It consists of 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 1 electron in M shell. To complete its octet, it should lose 1 electron from its outermost shell. The atomic number of chlorine is 17. It consists of 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 7 electrons in M shell. To complete its octet, it should gain 1 electron. When sodium reacts with chlorine, sodium transfers its 1 electron to chlorine. Since there was complete transfer of 1 electron, hence, the bond formed between sodium and chlorine is ionic bond, and the product formed is sodium chloride, also known as table salt. Let's take another example, that is a magnesium chloride. Okay. Now in magnesium chloride also, magnesium is a metal and electronic configuration is 282. क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, करेक्ट। मैग्नीशियम को स्टेबल होना है तो मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, करेक्ट। मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 क्लोरीन पिक्चर्स में आएंगे, ओके। एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। मैग्नीशियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ओके, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 288। वेरी सिमिलर हियर आल्सो, मैग्नीशियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 288। एज मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इनके पास -1, इनके पास -1, and here there is a electrostatic force, here is also there is a electrostatic force, and due to this force what happened, this valency get neutralized और हमें एक कंपाउंड मिलेगा, that is magnesium chloride. Okay, so this we have done the 2 example for ionic bond, one is NaCl and one is magnesium chloride. Main point ये है कि ये bond metals और non metals के बीच में ही रहेगा. So covalent bond means sharing of electrons. There are 2 types of covalent bond. One is polar covalent bond and another one is non-polar covalent bond. Now non-polar covalent bond मतलब क्या? पहले हम non-polar covalent को पढ़ लें. एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन, ओके। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2,6, ओके। लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है स्टेबल होने की, सो ऑक्सीजन का मैं ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेसिकली लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रही हूँ। So there is a 6 valence electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ये ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवाता है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This got stable. Similarly here also ये भी अपने बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इसके से शेयर करते हैं, जैसे S 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. So this is also got stable. So you can write down this like as this like this way also. So basically ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड O2. Okay, so non-polar covalent bond means the bond which exists between same non-metals element.
ओके, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दोनों एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बोथ आर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बहुत सिंपल वर्ड में दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन आल्सो. इन अ नाइट्रोजन लाइक N and N, N का इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है हमारा 2 5. ओके, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग ओनली द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, one like this way, here also 1 2 3 4 5. Okay, now obviously there is a 5 electrons, 3 electrons are required to get stable. तो ये वाला नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा, ये वाला नाइट्रोजन भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा. Okay, you can write down the structure like this way also. Basically 3 pairs of electrons are shared, okay, and that is the reason there is a triple bond N2. So non-polar covalent bond मतलब कि दोनों एलिमेंट सेम हो सकते हैं. एक आप ये समझ सकते हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इनके बीच में जितने कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होने चाहिए, एंड और उसमें कोई प्लस और माइनस चार्ज नहीं होगा. दे डोंट हैव एनी प्लस और माइनस चार्ज, सो दैट इज कॉल्ड non-polar covalent bond. Coming to the polar covalent bond. Now what is polar covalent bond? Here there is a difference in the electronegativity. The bonds takes place between the difference in the electronegativity elements. Example ले लेते हैं, जैसे HCl, HBr. Now here H, hydrogen. Hydrogen के पास एक इलेक्ट्रॉन है, right? And chlorine, it has 7 valence electron. I am just representing a valence electron. Okay, electronic configuration is 287. I will be representing only the valence electron. So 1 2 3 4 5 6 and 7. Now हाइड्रोजन को स्टेबल होना है. हाइड्रोजन कौन सा लॉ फॉलो करता है? डुप्लेट लॉ. सो मतलब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. सो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए. सो ऑब्वियसली दैट 1 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड टू द क्लोरीन. नाउ as number of electron in a chlorine is more, electronegativity of chlorine is more, so this electron, hydrogen का electron है ना, वो थोड़ा सा pulled towards chlorine होगा. It will be not going completely getting that side, but yeah, it will be little bit towards chlorine. As it is little bit towards chlorine, what will happen? There will be a partial positive charge, and here there will be a partial negative charge. And due to this partial positive and partial negative charge, there is a bond exists, that is HCl. So HCl, HBr अगर आप देख रहे हो तो इनकी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इनके इलेक्ट्रॉन्स खाली एक है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज मोर, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल्ड हुआ, and that is the reason the difference in charge got generated. और ऐसे सारे एग्जांपल हमारे पोलर कोवलेंट बॉन्ड में चले जाते हैं. HBr का सेम केस, अगेन हाइड्रोजन, ब्रोमीन. अगेन ब्रोमीन के भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सेम सिनेरियो है हमारे पास, हाइड्रोजन के एक, correct? HBr. So same, where there is a different element, okay, there will be no similar element, there will be a different element. That comes under polar covalent bond. So we are starting with the coordinate bond, which is kind of covalent bond. Here also sharing of electron takes place. Now let's take the example of ammonia, hydronium ion reacts to form ammonium ion. Now होता क्या है? हमारे अमोनिया में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. There is a lone pair of electrons मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं किए हैं बॉन्डिंग में, तो there is a lone pair of electrons. और हाइड्रोनियम आयन या H+ या इसे हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, सो H+, और जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारा अमोनियम आयन फॉर्म होता है. ये कैसे होता है कि जो प्रोटॉन है H+
आज इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और हमारे अमोनिया के पास दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी ये दो इलेक्ट्रॉन, अपनी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों शेयर करेगा. ओके, सो बोथ द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू नाइट्रोजन, but what nitrogen is doing, it is sharing that electron. So one electrons will be shared to whom? Hydrogen ion. Okay, प्रोटॉन को शेयर करेगा. So कुछ इस तरह हम इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे like this way. This means that both the electron belongs to nitrogen. Correct? Electrons दोनों किसका था? नाइट्रोजन का. हाइड्रोजन ने कोई शेयरिंग नहीं की है. नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शेयर किया गया है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसका भी है, उसने शेयर किया है. सो हियर माय नाइट्रोजन इज डोनर एलिमेंट, डोनर, वेयरएज हाइड्रोजन इज एक्सेप्टर. तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है प्रोटॉन के साथ, तो हमें ये एक स्ट्रक्चर दिखेगा और इस स्ट्रक्चर को हम अमोनियम आयन कहते हैं. सिमिलरली हम हाइड्रोनियम आयन को भी बना सकते हैं, वो भी कुछ इस तरह. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर. करेक्ट. नाउ हियर देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, बेसिकली दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ भी हमारे एक प्रोटॉन आएगा. प्रोटॉन मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो H+ आयन आएंगे और रिएक्शन प्रोसीड होगा. यहाँ ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा. सो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर करवाएगा. इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज नॉट शेयरिंग एनीथिंग, ऑक्सीजन शेयर कर रहा है. इसलिए इस तरह का एरो दिखाएंगे, वेयर ऑक्सीजन इज माय डोनर एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज एक्सेप्टर एलिमेंट. ओके, और there will be a formation of this hydronium ion. So H3O plus NH4 plus, this whatever we get, this is due to the coordinate bonding.